continues to be resilient, backed by improved capital ratios, asset quality, and robust earnings growth. The financial indicators of non-banking financial companies, that is NBFCs, are also in line with that of the banking system as per the latest data available. While banks and NBFCs are showing good performance now, sustaining it requires concerted efforts. In good times like these, banks and NBFCs need to reflect and introspect as to where potential risks could possibly originate. Now is the time for them to further strengthen their risk management practices, build additional buffers to face the situation if the business cycle turns adverse in the future due to some reason. The monetary policy actions of the Reserve Bank over the last 1.5 years, consisting of prioritization of inflation ahead of growth, and as you would recall, we did it in May 2022, or rather April 2022, we did it, that is prioritization of inflation ahead of growth, narrowing the liquidity adjustment facility corridor, increasing the policy repo rate by 250 basis points cumulatively starting May 2022 till now, draining out excess liquidity, together with certain supply-side measures undertaken by the government, have facilitated significant softening of headline inflation to 4.9% in October 2023. The moderation in core inflation in particular is noteworthy. There is also recent evidence of household inflation expectations becoming more anchored. Headline inflation, however, remains vulnerable to recurring and overlapping food price shocks coming from global factors and local adverse weather events. The frequency and intensity of such shocks have increased in the recent period. Monetary policy in such a scenario needs to remain watchful and actively disinflationary while supporting growth. ओके तो आप देखिए गवर्नर साहब ने कहा क्या है बेसिकली और क्यों बैंक निफ्टी ने इस तरीके से रिएक्ट किया, क्योंकि आपने फ्राइडे का मूव देखा था और फ्राइडे को बात ये हो रही थी कि क्या वो वन ऑफ था आरबीआई का मूव या कुछ और कदम भी आएंगे। एक रिस्क वीरू जो मार्केट में आ रहा है, मार्केट में एक रिस्क ये आ रहा है और ये मुझे 2-3 लोगों ने बात बोली है कि थोड़ा सा शायद कंसर्न है रेगुलेटर्स में कि बहुत सारे पर्सनल लोन लिए जा रहे हैं और वो पर्सनल लोन लगाए जा रहे हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में। आपको याद होगा जब हम एफएनओ गुरुकुल कर रहे थे उसमें भी एक सवाल आया था जिससे हमारा दिल बहुत दुखा था, जिसमें एक सज्जन ने 75 लाख रुपीस लूज़ किए थे। उनकी इनकम का 5 टाइम्स था, वो 15 लाख की सैलरी वाले 75 लाख उन्होंने लूज़ किए थे। तो उन्होंने मतलब ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा इस चीज़ का एक क्लियर कट सिस्टम में है कि थोड़ा सा जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उस पर थोड़ा सा एक टाइटनेस ज़रूरी है। और ये जो उन्होंने कहा कि भाई अब तो खैर दौर अच्छा चल रहा है और गलतियां अच्छे दौर में ही होती हैं। आप पिछले जितने भी सारे वो उठा के देख लीजिए, जो एनपीएस क्रिएट हुए या जो भी सिस्टम में रिस्क क्रिएट हुए, वो सारे के सारे जब इकोनॉमी का अच्छा टाइम चल रहा था तभी होते हैं। ख़राब टाइम में तो हम सब केयरफुल हो जाते हैं, गलतियां हमसे तभी होती हैं जब अच्छे टाइम चल रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने इन्फ्लेशन पर कही कि कदम उठाए हैं उन्होंने और हमेशा प्राथमिकता जो थी, जो उनकी प्रायोरिटी थी, और वो आरबीआई का काम वही है, सरकार का काम ग्रोथ पर फोकस करना है, आरबीआई को अपने सप्लाई साइड इशू मैनेज करने होते हैं, तो उस पर उन्होंने इन्फ्लेशन पर एक प्रायोरिटी रखी है और अभी भी वो यही कह रहे हैं। यही फेड के मिनट्स में भी आया था। कोई आरबीआई गवर्नर या कोई फेड ऑफिशियल आपको आके नहीं बोलेगा कि मैं अगली पॉलिसी में रेट कट करने वाला हूँ, ये मतलब वो कभी नहीं बोलेंगे। वो हमेशा काम ही यही है, थोड़ा सा कॉशियस सिस्टम में रखना ज़रूरी है। इसकी वजह से आज थोड़ा सा मार्केट गिरा है, लेकिन ठीक है, एक्सपायरी भी थी और भी बहुत फैक्टर थे, मार्केट को एक्सक्यूज़ चाहिए था, मार्केट करेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।